बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर मिस सदफ और आज हम इंग्लिश के लेसन में एक नई साउंड, उससे रिलेटेड कुछ नई वोकैबुलरी सीखने लगे हैं। एंड आई होप दैट यू आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड डियर टीचर्स। द मटेरियल फॉर दिस लेसन इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू शुड हैव क्लिक्ड इट एंड डाउनलोडेड इट, जिसमें वर्कशीट भी मौजूद है, एक्टिविटीज़ भी मौजूद है और एक डिटेल लेसन प्लान भी मौजूद है, जिसके थ्रू आप इस एक्टिविटी को लेके आगे बढ़ेंगे। So my dear students, please have a look at the screen and see the letter and the pages you're going to do today. आज जो हम पेज करने लगे हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हम एक पहले कुछ पिक्चर्स देखते हैं, उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, टीचर से उनका नाम सुनते हैं, पूछते हैं और उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं और वो स्टोरी आपकी किताब का, आपके सबक का हिस्सा ही है। Dear teachers, in early stage we develop the skills of the students from listening, speaking, reading, writing. ये नेचुरली बायोलॉजिकल साइकिल ऑफ लर्निंग है, जिसमें कोई भी नई स्किल, कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सबसे पहले उसको सुनता है या देखता है और उसके बाद फिर उसके बारे में बात करता है और उसके बाद ऑन द लास्ट स्टेज उसको लिखाई के लिए की तरफ उसको लेके आते हैं। तो आज हम जिस साउंड, जिस लेटर की बात करने लगे हैं डियर टीचर्स, दैट इज मेंशन्ड हियर ऑन द पेज। आप देख सकते हैं आज डे 1 है इस साउंड का। इसका मतलब है कि आज हम एड्रेस करेंगे मोर ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। Once you have seen the page, let's move on and talk about the expected learning outcomes. Recognition of letters with their initial sound. Recognition means whenever they see the word, they can tell the name, whenever they hear the sound, they can identify it while it's written somewhere or they can write it themselves. So once this task is achieved on day 1, we'll move on to day 2. On day 2, we are going to focus on the reading and writing skills of the students. So we are going to practice different activities, जिसमें बच्चों आज आपने कुछ सुनना है, देखना है और मुझे बोल के बताना है। So please students, look at the screen and tell me what do you see. सबसे पहले अगर आपने पेज को ऑब्जर्व कर लिया है तो कुछ तस्वीरें आपकी किताब पे दी गई हैं, उन्हीं को जरा हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं and then we will move on. This is the picture of a nail. Nail. इनिशियल साउंड न, नेल। जी, ये वही कील है जिसको हम इंग्लिश में नेल कहते हैं और जिसको हम हैमर या हथौड़ी की मदद से किसी लकड़ी में लगाते हैं या दीवार पे लगाते हैं अगर हमने कोई चीज़ लटकानी हो, तस्वीर लटकानी हो, कोई बल्ब लगाना हो या रस्सी बांधनी हो तो। दिस इज नेल। पिक्चर नंबर 2, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ नर्स। इनिशियल साउंड न, नर्स। Then picture number 3 is of a needle. This is a needle, yani sui. Needle. Initial sound n. Teachers, please focus on the correct pronunciation also. This is the picture of a nest. Nest यानी घोंसला जिसमें परिंदे अपने अंडे देते हैं और इसमें से छोटे छोटे से फिर birds निकलते हैं। So students, you have to look at all these pictures and you have to tell what these are. Teachers, आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें। जो वोकैबुलरी किताब में दी गई है, जो वोकैबुलरी अभी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर की गई है, उस वोकैबुलरी की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ बच्चों का फोकस और अंडरस्टैंडिंग उसकी इनिशियल यानी इब्तदाई आवाज़ पे रखिए। आज का हमारा इनिशियल साउंड डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिकॉल वंस अगेन सो दैट यू नो। आज का हमारा पहला साउंड का जो पिक्चर का पहला स्टार्टिंग साउंड है, इट इज नेल, नर्स, नीडल एंड नेस्ट। द स्टोरी सुनने से पहले टीचर्स, आप किताब में जो दी गई तस्वीर है उनके ऊपर एक एक करके बच्चों से फिंगर रखवा के उसका नाम जो है वो रिकॉल करवा लें, क्योंकि जब ये स्टोरी सुन रहे होंगे मेरे से तो इन्होंने उस पिक्चर के ऊपर अपनी किताब पे फिंगर रखनी है, बिकॉज वी आर डेवलपिंग देयर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। सो व्हाइल आई एम स्पीकिंग दे विल बी लिसनिंग टू मी। तो जब मैं वर्ड जो न का वर्ड है वो बोलूँ और उसकी तस्वीर हो तो उसके ऊपर ये पॉइंट करेंगे, तो इनको इसका मतलब है कि आइडेंटिफिकेशन शुरू होने लग गई है आवाज़ की। वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद द साउंड। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड रिपीट ऑल दी वोकैबुलरी पिक्चर्स गिवन इन द बुक। जी प्यारे बच्चों, नाउ इट इज टर्न टू रीड आउट द स्टोरी लाउड टू यू।
टीचर्स, अब मैं स्टोरी पढ़ूंगी और आपने तवज्जो रखनी है बच्चों की पिक्चर आइडेंटिफिकेशन पे। इस एज और स्टेज पे जितने ज़्यादा बच्चों को हम वैरायटी ऑफ पिक्चर्स दिखाते हैं और ऑब्जेक्ट्स के नाम बताते हैं, तो लेटर ऑन स्टेज ऑफ लाइफ में, स्पेशली लर्निंग के प्रोसेस में, उनके पास एक चीज़ के लिए दो दो तीन तीन वर्ड्स वोकैबुलरी में इजाफा करते हैं और इसी से ही उनकी लर्निंग और रीडिंग बहुत जल्दी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो आइए टीचर्स नोट देखते हैं। रीड द स्टोरी टू द चिल्ड्रन एंड आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस अबाउट इट। So dear teachers, I will be reading the story with the correct intonation which is required. Intonation का मतलब उस उतार और चढ़ाव से स्टोरी के जिसमें उसमें ज़रा एक्साइटमेंट पैदा होती है। और आपने कोशिश करनी है कि जब आप इस वीडियो को पॉज करें तो स्टोरी एक या दो बार इनको दोबारा पढ़ के सुनाएं और उसी तरह ही कोशिश करें कि बच्चे उसको आपको रीटेल करें, चाहे अपने अल्फाज में करें। स्टोरी में अगर आपको लगे कोई ऐसे अल्फाज हैं जिनके बारे में इनका जानना ज़रूरी है, इनकी लोकल लैंग्वेज में ज़रूर बच्चों को से जो है वो वाकफियत दें, इनको कनेक्ट करें ताकि उनको पता हो कि इसको उर्दू में ये कहते हैं और इंग्लिश में ये कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द स्टोरी लाइन गिवन इन योर बुक, आपकी किताब में जो स्टोरी है मैं इसको पढ़ने लगी हूँ और आपने क्या करना है, जी हाँ, आपने किताब में जो तस्वीर दी गई हैं ज़रा उन पे उंगली रखनी है। अगर आपको उन तस्वीर के नाम अब सुन के समझ आ गए हैं और आपने बार बार बोल के रिपीट कर लिए हैं तो फिर टीचर रीडिंग करेंगी, आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे फिंगर रख के। सो लेट्स स्टार्ट। फोकस ऑन योर बुक पेज प्लीज एंड आई विल बी रीडिंग द स्टोरी फ्रॉम द स्टोरी लाइन। Nadir was a naughty boy. Every day he would annoy his friends and parents. He would try all naughty acts to disturb people around him. His mom and dad were very upset. His father warned him many times that someday he might hurt himself. One morning her father asked Nadir to fetch the newspaper from the gate. Nadir ran towards the gate and got his shirt stuck in the nail on the wall and he fell. His nose was bleeding and his knee got some scratches too. His father was really angry at him. Now I need to take him to the clinic to get some medicine and bandages. His father informed his mother and took him to a clinic near the home. It was early morning and doctor on duty was absent. Nadir was in pain. He quickly wanted his blood to stop. His nose was hurting so much. From the door appeared a nurse. Her name was Nadia. She was very polite and had a smile on her face. She treated Nadir and gave an injection to reduce his pain. When the needle hurt, Nadir said, "Ouch!" Nadir promised the nurse, Nadia, that next time he will be more careful and will listen to his parents to keep himself safe. Yes, teachers. Now it's time for you. If you want, you can pause the video here, retell the entire story, talk about the story, explain it to the students in simple words if you want to. बच्चों को सारी स्टोरी समझाने के बाद उनसे कहें कि वो आपको रीटेल करें स्टोरी कि आज की स्टोरी में क्या हुआ है और नादिर कौन था, वो क्या कर रहा था, उसके बाबा ने उसको किस चीज़ से मना किया था, वो क्या लेने के लिए गेट पे गया था और कैसे वो नीचे गिर गया और उसको चोट लगी और फिर उसके नाक को क्या हुआ था। ये जो सारे इवेंट्स हैं स्टोरी में बच्चों से कहें कि वो आपको रीटेल करें और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप बच्चों को स्टोरी 2 से 3 दफ़ा सुना के उनका जो स्टोरी का फ्लो है वो समझाएंगे। सो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें और बच्चों से कहें ज़रा स्टोरी में जो पिक्टोरियल मटीरियल है उसको डिस्कस कर लें और फिर बच्चों से कहें कि वो आपके साथ शेयर करें एंड देन गेट बैक फॉर द वीडियो लेसन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी आप जिन वोकैबुलरी वर्ड्स का डिस्कस कर रहे थे टीचर के साथ जो कि आपकी स्टोरी में भी दी गई हैं, जिनके बारे में आपने बात भी की है, जिसकी इनिशियल साउंड है न, तो ज़रा स्क्रीन पे देखिए, ये है फेस इस साउंड का न। न जब आप न करेंगे तो आपकी ज़बान जो है आपके तालू से टकरा के थोड़ा सा प्रेशर देगी और हवा जो है आपके नाक से निकलेगी फ्रॉम योर नोज। सो रिपीट विद मी, न
देखा, थोड़ी सी यहाँ पे आपको वाइब्रेशन सी भी फील होती है. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट साउंड यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से निकल रही है. कुछ आवाज़ें हम अपने मुंह से निकालते हैं, कुछ में हम जबान को ट्विस्ट करते हैं, कुछ में हम जब तालू से प्रेशर करते हैं तो नाक से निकलती है. तो इस वजह से जब आपको टीचर बार बार कहती हैं कि इस आवाज़ को बार बार निकालें, तो आपने अपने ऊपर भी ध्यान देना होता है कि मैं आवाज़ कहाँ से निकाल रही हूँ या कहाँ से निकाल रहा हूँ, हलक से के नाक से के तालू से. तो टीचर्स बच्चों को जब आप न का फेस दिखाएं तो ज़रा हवा में इनसे राइटिंग करवाएं. डियर स्टूडेंट्स प्लीज लुक एट द साउंड. दिस इज द साउंड. अब आप देखें जो वोकैबुलरी वर्ड्स आपने शेयर किए हैं, किताब में भी दिए गए हैं, क्या उनके शुरू में ये साउंड है न की? देखते हैं किस किस को मिल गई है साउंड. लुक एट दिस पिक्चर प्लीज. This is the picture of nose. Can you circle it with me? Shabash. This is the picture of a newspaper. This is the picture of nail. This is the picture of needle. And this is the picture of nurse. तो देखा आज आपने न की साउंड के कितने सारे वर्ड्स देखे और एक छोटी सी स्टोरी भी सुनी. तो टीचर्स आपने बच्चों की वोकैबुलरी को फर्दर डेवलप करना है. फ्लैश कार्ड्स की मदद से कोशिश करनी है कि जितने ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स न की साउंड वाले बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी कॉर्नर से लेके आ सके. अब आपने उनको टाइम देना है कि वो ये एक्टिविटी करेंगे क्योंकि ये आवाज़ से भी वाकिफ़ हो गए हैं और जो आज का साउंड है उसका फेस भी इन्होंने देखा है. बच्चों को आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग लेटर्स इन द एयर एंड मूविंग द हैंड इन द करेक्ट डायरेक्शन, और यू कैन यूज़ अ सैंड बॉक्स जिसपे बच्चे उसके अंदर राइटिंग करेंगे. लेकिन आज लेटर जिस आवाज़ की बात करें उसकी इनको प्रैक्टिस करवा लीजिए. एंड देन देर इज़ अ स्मॉल पोएम. Please students get up, I'll sing the poem and then you will do some actions. टीचर्स इन पोएम्स का मकसद बच्चों से सिर्फ उस आवाज़ की शनाख्त करवाना होता है जिसको हम लेसन में करें. तो प्लीज़ बच्चों को खड़ा कीजिए, रेडी कीजिए. अगर क्लासरूम में स्पेस नहीं है तो पोएम को जो है बच्चे बैठ के भी एक्शंस के साथ सिंग कर सकते हैं. एंड व्हेन दे गो टू द प्लेग्राउंड दे कैन प्रैक्टिस इट वंस अगेन. सो प्लीज़ हैव अ लुक एट द स्क्रीन. 4 happy nurses jumping on the floor. One fell down and bumped her head. The doctor said, "No more jumping, girls." So poem को जो है डिस्कस कर लेने के बाद, सिंग करने के बाद, टीचर्स अगर आप चाहें तो अपनी भी छोटी सी कोई पोएम बना सकते हैं. मकसद ये है कि वोकैबुलरी के वर्ड्स उन पोएम्स में इस्तेमाल हों. Now there's a group activity. You need some Play-Doh to make the face of the sound we have discussed today. So teachers बच्चों को प्ले डो दें ताकि ये उसको जो है यूज़ करके आज की साउंड का फेस बना सके. और उसके बाद my dear students when you go to the playground find as many objects of the starting sound which you can. अगर आपको बाहर नेल मिलता है तो ज़रा ज़रूर ढूंढ के देखिए और एक दूसरे को दिखाइए कि दिस इज़ नेल. और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी that I leave up to you and your teachers. So dear teachers, for writing practice there is a worksheet given in the description box. Make sure the children start writing, practice writing with a crayon or a pencil if they are confident. Take care and Allah Hafiz.